Hi guys. So right now I just got a case जिसमें the patient is having a severe swelling after a surgery. So इन cases में हमें क्या करना चाहिए? What actually is the first preference after surgery? कि आपके पास सबसे पहले सर्जरी के बाद द मेजर पार्ट इज कि आपके लोअर लिम्ब में स्वेलिंग आ जाती है. वो क्यों होती है? दैट इज द रीजन बिकॉज यू आर बेड रिटन. आफ्टर अ सर्जरी यू हैड अ गुड ब्लड लॉस and your lymphatic drainage get accumulated into your foot region because there is no movement. कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली कि उसमें लिम्फेटिक ड्रेनेज आपका एक्यूमुलेट हो गया है एंड वो आपको स्वेलिंग में कन्वर्ट हो गया. देयर आर सेवरल एक्सरसाइजेज जो हम इनिशियल पीरियड में कर सकते हैं टू रिड्यूस योर स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन. वी कैन ऑल्सो से दैट like you can do your toe curls, then you can do your ankle toe pump, circulatory movement of your ankle, knee flexion, extension, and you can elevate your leg, but it should not be above 30 degree and precautions should be taken according to the surgery that has been taken place, because there are several surgeries like your spine surgery or anything जिसमें आपको elevation नहीं करना होता है. तो do not think कि जो मैं बता रही हूँ it can be used for every surgical thing. No. 19 20 2 3 4 सेम उल्टी तरफ. ये एक्चुअली सर्जरी से पहले मेरी Please do not consider this for everything. It is just for initial period, like after TKR, THR or anything like that. जो lower limb की surgeries होती हैं, you can DM me anytime or anything. I'll guide you what you have to do and what not you have to do. हर चीज़ सोशल मीडिया पे देखकर या फिर वीडियोस देखकर, it is I'm saying this on my channel, on my clips, because I have nothing to do, but I just want कि patient should be get well. मेरी वजह से किसी का भी कोई हार्म नहीं होना चाहिए. So please take precautions, do things accordingly as your doctors have prescribed, or ask me once, I'll guide you what you have to do and what not. Please, this is something which initially you can do in many cases, but there are some contraindications also, so please consider that.